HAN1 आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट ये है, HAN2 है। आई हैव गिवन कंडीशन इन HAN1। HAN ओके सर, उसको H1 नहीं कर सकते सर फिर अगेन? कर सकते। सेम उसमें ही पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में? गलत बदल दिया उसको। HAN1 को HAN1 जो करना है वो असाइन करो, डबल ओके कर ओके दिए तो इट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके सर। अभी मैं चेंज करने के बाद फिर वो HAN2 क्यों करे तुम? क्या क्रिएट करे आखिर तुम HAN1 में अकाउंट्स? अच्छा, हंड्रेड्स यू क्रिएटेड। ओके। ओके ओके सर, अब समझ में आया। डन। ओके। एंड चंदना, सर we are, एग्जैक्ट yeah, इशू है। 1 minute, let me complete for Chandana. Chandana, you are getting the error in F-43, right? What is your company code, Chandana? Sorry, MAH7, sir. I was in. 7. MAH7 or MAH1? MAH7, sir. Is it right? Yes, sir. But you don't have vendor. I have, sir. I have created actually. I- Okay. So you have not created vendor. Sir, I have created actually. Hmm. Okay, I'll try to do from starting, sir. Try I'll to create create the one. vendor first. Okay, sir. Pallavi, have you done the task? यस एक्चुअली क्या वो इशू आ रहा था सर, पीरियड वेरिएंट आर के इज नॉट डिफाइंड ऐसा। कहाँ पे आ रहा था आपको? एफ F-02 में। ओके, आपका कंपनी कोड बोलो। RAJ1।
यहाँ पे आपने आर की क्यों असाइन किया है? सर शायद वो वेंडर क्रिएट करते टाइम। नहीं, उससे उसका मतलब नहीं है। आज वन। यस सर। 4003 अकाउंट। वेंडर अकाउंट आई नीड। ओके। नंबर इन 17 इज मिसिंग। ओके, पूरे स्टेप किए क्या आपने? यस सर। यू क्रिएटेड 19 एंड 15। नंबर एंड 70 नहीं है सर उसमें। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड 19 ही होता है। somebody has done the changes. She created 19। वो मेरा में वैसा ही आया था सर, 17 बोलकर आया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। केस मैंने 19 और 17 दोनों में क्रिएट किया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बट दिस इज स्टैंडर्ड। हो गया। यस सर। आपके पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। आपके क्यों आ रहा है ये बार बार? यू हैव राजवन। ये तो बराबर है। सर उसमें अजन कंपनी कोड नहीं किया होगा तो सर, वो भी 29 में पोस्टिंग क्रिएट करने के बाद अजन कंपनी कोड नहीं। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है।
Period version. RK is not defined. Why you went for versions? Your fiscal year variant you have given this one. That's why you are getting the error. This one. अब करके देखते हैं. Now it is done. Now you can do Okay, sir. further process. Yes. हाँ. Who is next? किसको issue है और? Malinath. Have you done the task? Malinath, are you there? No. You're not there? Sir, Hmm. sir, last class I wanted to join, sir. And Ibrahim, कहाँ तक हुआ practice? सर मेरा अभी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा, करना है सर स्टार्ट। मैं अब तक बिजी शेड्यूल था, अब मैं फ्री हो गया, इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। करो करो. So एक साथ पूरा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा 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 करके कंप्लीट करना. नहीं तो पूरा मुझे एक साथ. जीएल हम्म. क्रिएशन से स्टार्ट करना था, वहां तक कर लिया मैं। गुड. उसके बाद में टास्क दिया है जीएल पोस्टिंग का, वो एक बार देख लो. ठीक है सर। ओके. एंड शिवा, मैं करता कहीं नहीं. జిఎల్ క్రియేషన్ చేయాలి సార్ నేను देन కొద్దిగా బిజీ पोस्टिंग. స్కెడ్యూల్ వల్ల చేయలేకపోతాను ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट. ఓకే तृप्ति, సార్ कहाँ तक हुआ है? तृप्ति, कुछ हुआ? कुछ प्रैक्टिस, कुछ एरर्स, कुछ स्टेप्स? अच्छा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो. चलो, हैप्पी जर्नी. कल भी लेंगे हम. ओके, कोई बात नहीं. सो विल डू द गाइस जीएसटी टुडे. इट स्मॉल टॉपिक. ओके. सो विदाउट सर पेबल. रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट. रिकॉर्डिंग चल रहा है. ओके ओके। एंड विदाउट डूइंग पेबल, आफ्टर डूइंग पेबल और रिसीवेबल, यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम विद जीएसटी. तो व्हाट इज जीएसटी? ये जीएसटी है क्या? जीएसटी एंड टीएनटी. Goods and service tax. हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. They made it very easy. They made it very easy. Okay. Call me tomorrow. I will update you. Okay. Goods and service taxes. Before this, we have different kind of taxes in India, and they implemented GST to make it easy for the taxation. So how taxation will work? Tax कैसा काम करता? Tax ఎలా పనిచేస్తుంది? For example, I am purchasing from the vendor, and this is my 1,000 rupees.
Within state అయితే Let me go ahead on that second level. First, complete this one. okay. If we are doing purchasing of 100, within that 90 rupees we are doing payment and 10 rupees will be your tax. So what vendor will do? 90 he will take, 10 rupees he will pay to government. In the same case of sale, if you are doing sale, if you are receiving the 100 rupees, including with taxes, 90 and 10. So 90 we can take it, 10 rupees we can pay to government. So end of the day, in any point of view, tax is going to pay to government. In that taxes, we have three types: CGST, SGST, IGST. C का मतलब है central, S is state, I is integrated. So as you said, central में हमारा दुकान है या कंपनी है, we can take central tax only. And if we have state-wise, we can take one time. If you have organization in two levels, we can take only one time. Okay. So if your organization is registered in two places, so you don't need to pay two times. We can pay only one time. That is called integrated tax. And they implemented GST because in another companies, another countries are also using the GST. That is the main concept. And most of the standard conditions are already existed in SAP that we can use it. Right? Coming to the Sir, in that first, one more, it will, tell me. sir, in that one more, it will come UT GST, sir. In that, it's not applicable for this. Yes, yes, yes. That is also applicable if it is required. Okay. Right. We are taking these three as a standard. We can add into that also if it is required. Now, coming into the check tax procedures, we can check the tax procedures and conditions in OBQ3. Okay, we can unlock this first. OBQ3. So there we have standard tax procedure, and that should be India, IND. We can just check the data, whether it is existed or not. Select the line and double click on control folder. You can see these conditions. And VST indicated as input, which we have three inputs, and MWS indicated as output. MWS is output. Three inputs, three outputs, and these conditions and details and how calculated will be the tax on base amount. On base amount, tax will be calculated. Now, I'm coming with the second step. Because we have standard conditions, we can just check the data. Second step, assign tax procedure to country. That we can do it with OBBG. OBBG. We are assigning tax procedure to country. यहाँ पे हम tax procedure को country को मिला रहे हैं. ఇక్కడ మనము tax procedure ని country ని కలుపుతున్నాం, which is standard. Position, IN, enter, and I am taking your tax details. IND. Save the data. Continue. I have done this one. Next. Created tax codes. How much percentage you need? 5%, 10%, 18%, input, output, what you want. So that all things will be
taking here your code. You can take it A0, A1, B0, B1. You can take any name. I am coming to FTXP and I am creating new names. Country IN, enter. Tax code will be new conditions I am taking Y0, enter. And Y0 code I am taking, Y0 detail I am taking as 0% input tax. Tax type will be V for input, A for output. Press enter, taking the input taxes 0. Okay, 0 for 3 taxes, which is VST, and I can save. Taking the new one, which is Y1, enter. For Y1, I am taking 5% in tax. Tax type V, enter, and I can take 2, 3, 0. You can take anything but total 5. That should be there. Save it. Done. Remember, as we have created Y0, 0% tax input, Y1, 5% tax input. This is for input, this is for output. Sorry, input. Sir, we can collect any alphabet. Anything. You can take alphabet, you can take numeric, you can take alphanumeric. Okay, sir. Okay. But when you are working in a project, they will tell you what you have to take. Okay, sir. U0. Like country wise tax we can take it. Yes. 0% output tax. Tax type A. Enter. And this is for 0%, 30% taxes. Okay. And this is for 30% output taxes. And the next one will be 0% output. And I'm taking U1 for 18% output. U1, 18% output, tax type A. Press enter. And 18 should be there. So I'm taking 9 and 9 and 0. Save it. Done. Then we are coming to the 0% tax code. जिसको tax नहीं रहता उसको हम 0% tax बोलते हैं. ఎవరికైతే tax ఉండదో వాళ్ళకు మనము 0% tax అన్నాం. So we are assigning this 0% taxes to my company code, that is Y0 and U0. Both things will be assigned in OBCL transaction code. Okay. Now I'm coming with OBCL. I'm taking DV by 1. Taking here as what is the input and output? Y0, U0. Y0 for input 1. U0 for output 1. Save.
Done? Then I can create 3 GL accounts. One is for purchase, sorry, one is for tax receivable, tax payable, and purchase. And we have some different conditions you should take. Coming to FS00. DB by 1. I'm taking here tax receivable account. You can click on create. I'm just showing you with income account, profit and loss, tax receivable account. Take the standard condition, tax category, star symbol, and line item short key 001. And third condition should be change, which is G041, which is tax office clearing. 3005. And payable account, I can create it in expenses. Create it in expenses, profit and loss, tax payable. Same conditions you can take it. Short key, line item, and star tax category. G041. Save it. 4013. The existed purchase account, you can change the star tax category. जो purchase account है आपका, that also you can take it star purchase, say 4006. Right? Next, we are assigning this ledgers to automatic posting in OB40. Then we can purchase as how tax is deducting, we can identify here. Okay. Now we can assign this to accounts in OB40 for input and output. Coming to OB40. And we have standard tax transaction keys, and we need two things, that is VST, MWS. So I'm coming to VST first. Double click on this and chart of account. Give your account and we can save. Then come back for MWS. Double click on MWS. There also double click on this, give the account and save it. Now I can do the process of purchase so you can identify that tax is deducting or not. Let's see in F-43 purchase. I'm taking vendor account here. Enter 1000. Select the calculate tax option. Purchase invoice posting key 40. Purchase account 4006. Enter. You can take star and plus. This is not available. Leave it. But take the tax code, which is output. What I created here.
U1. You can search also. I am taking here directly U1. Enter and simulate the data. Tax is deducting or not, you can check it. Check the data. So We are getting this account automatically. That is a compulsory you have to check. How we are getting this account? Because of this account is assigned in the automatic posting. अगर आप अकाउंट असाइन नहीं करोगे तो टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा. అకౌంట్ మనము ఇక్కడ అసైన్ చేయకపోతే ట్యాక్స్ అనేది డిడక్ట్ కాదు. Right? And for this you have to complete your practice so you can understand the concept. Okay everyone? सर जब हम मोस्टली यूएस क्लाइंट के लिए जब हम काम करते हैं तो जीएसटी नहीं रहेगा ना सर? वो शायद यूएस यूके में जीएसटी है ना, कौन बोला नहीं है बोल के? Who said that? मैं पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं है उनको भी. Most of ओके. the foreign countries are using GST. हमारे परसेंटेज पास नहीं दूसरा था. रहेगा भाई. Earlier we have हाँ. seen country ओके. version India, VAT, so many things are there in India. So it's very hectic to understand the concept of Indian tax. Now they made it very easy. ओके. Okay. हमारा पास टैक्स का रेट कम है ना, उधर दूसरा रहेगा. Ah, right. Tax rate will be different. That's it. 0.5 18 40% है हमारा. इसमें दूसरा रहेगा इंटरेस्ट. डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिफरेंट इंडस्ट्री. Yes, you are right. Okay. So guys, we'll see you tomorrow and we'll connect and complete the another topic. But try to complete your practice. सर अपना अकाउंट्स पेएबल का क्लियर होगा सर, मतलब अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट्स पेबल का टॉपिक. कौन से बैच की बात कर रहे तुम? ये वाला मतलब बहुत आगे का है, ये नहीं कंफ्यूजन हो जा रहा था थोड़ा मेरे लिए. अकाउंट्स पेबल में अलग अलग सिनेरियोस हैं. फर्स्ट मैनुअल पेमेंट. मैनुअल. Like we can purchase 100 and we can pay 100. Second, partial payment. Like we can purchase 100, we can pay 50 and 50 ऐसा रहता. Then advance payment. Then automatic payment. Then how we are getting discount or called as payment of. ऐसे सिनेरियोस हैं. तुम एक बैच की एक टॉपिक को फॉलो करो तो समझ में आता. ओके राइट. सर. नहीं, मेरा मतलब प्रैक्टिस के इसमें सर वेंडर मास्टर डाटा तक हुआ, हम्म. तो यहाँ तक ये हुआ तुम्हारा मैनुअल हो गया. फर्स्ट वाला हुआ. उसके बाद आप जीएसटी कर सकते हैं. ओके. बट मैनुअल के बाद जीएसटी कर हाँ सकते हैं सर. ये पार्शियल पे और एडवांस पे अपने को कर भी सकते आने हैं. वाला है, ये अपना कंप्लीट हो गया. नहीं, आई हैव टू चेक विथ दिस बैच पीपल. मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता. राइट. ओके सर. नहीं आई विल मतलब चेक. अपने मेल में आप रिकॉर्डिंग डालते ना सर, तो मैं उसमें वही नहीं देख है लो, एक बार इसीलिए. देखता हूँ. या आई विल चेक. ओके सर. सर फ्राइडे क्लास का वीडियो मुझे नहीं. फ्राइडे का खाली शायद मैं एक बार चेक करता हूँ. मुझे एक बार मैसेज करके रखो ना. टास्क टास्क दिए थे सर आप उस दिन, ठीक है वो सर. वाला. हाँ यस यस यस. नहीं नहीं क्लास नहीं हुआ. आई हैव गिवन अ टास्क ओनली. ऑन फ्राइडे एक्चुअली सर यस ऑन क्लास फ्राइडे हुआ था की ना, क्लास. छोटा टॉपिक था. मुझे देखना होगा एक बार. मैं एक बार चेक करके बोलता हूँ आपको सबको. ओके. ओके. फाइन. चलो सर, थैंक ओके यू सर. भाई. गुड नाइट. बाय एवरीवन.